ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো তাৰিখ পে তাৰিখৰ দিন গল কাৰণ সকলোবোৰ এতিয়া খৰটকীয়া হ'বলৈ গৈ আছে আপুনি ঠিকই শুনিছে এতিয়া অপৰাধীৰ ৰক্ষা নাই কাৰণ অপৰাধীৰ বাবে আহি গল তিনিখন নতুন আইন এতিয়া এই তিনিখন কঠোৰ আইনৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ কামকাজ অতি শীঘ্ৰেই হ'ব অৰ্থাৎ আমাৰ ভাৰতৰ যেটো ন্যায় ব্যৱস্থা সেই ন্যায় ব্যৱস্থা এতিয়া একেবাৰে খৰটকীয়া হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰতিগৰাকী অপৰাধীক এতিয়া তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব কঠোৰ আইন আহি গৈছে এই তিনিখন আইন কি কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব সবিস্তাৰে এই মুহূৰ্তত আমি জানিব বিচাৰিছো নিশ্চিতভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ দেখত আহি গল তিনিখন নতুন আইন আৰু এই তিনিখন আইনক লৈ ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰই ঘোষণা কৰিছে সকলোবোৰ কথা 1 জুলাইৰ পৰা দেখত বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে এই তিনি আইনৰ জৰিয়তে এতিয়া কি হ'ব আদালতত সকলোবোৰ ৰায় সোনকালে দিয়া হ'ব সকলো কাম খৰটকীয়া হ'ব দেখত অন্ত পৰিল আইপিসি আৰু সিআরপিসি আৰু সিআরপিসিৰ কাম এতিয়া শেষ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন এই তিনিখন আইন আহিছে নতুনকৈ এই তিনিখন আইনৰ জৰিয়তে এতিয়া সকলোবোৰ কামকাজ অতি সোনকালে হ'বলৈ গৈ আছে আইন অনুসৰি এতিয়া গণহত্যাত জড়িত সকলক ফাঁচি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে এই নতুন আইনৰ জৰিয়তে এতিয়া কি হ'ব ৰাজদ্ৰোহৰ যেটো ধাৰা আছিল 124A সেয়া এতিয়া সমাপ্ত হৈছে ৰাজদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া কি আহি গৈছে দেশদ্ৰোহ আইন পূৰ্বৰ যেটো ৰাজদ্ৰোহ আইন আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে দেশদ্ৰোহ আইন আহি গল সমান্তৰালকৈ নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য অৰ্থাৎ আৰক্ষীয়ে নিজৰ খাকি পোছাকযোৰৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব যাকে তাকে যতে ততে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পৰিয়ালক তথ্য দিব লাগিব যে কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কি আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ কোনো এটা গোচৰত 90 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ল সেই তথ্যও এতিয়া আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব মুঠৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে এতিয়া নিজৰ সেই খাকি পোছাকযোৰৰ অপব্যৱহাৰ কোনো পধ্যে কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক তথ্য দিব লাগিব পৰিয়ালক তথ্য দিব লাগিব 90 দিনৰ সকলোবোৰ ডিটেইলছ দিব লাগিব কিশোৰীৰ সৈতে ধৰ্ষণত যদি কোনোবা জড়িত হয় যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব এই আইন কেইখনৰ জৰিয়তে লগতে সন্ত্ৰাসবাদক লৈ দেখত আহি গল কঠোৰ আইন এই কঠোৰ আইন সন্ত্ৰাসবাদক লৈ এই কাৰণে অনা হৈছে কাৰণ শেহতীয়াকৈ ভাৰতবৰ্ষত সন্ত্ৰাসবাদ যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু মানৱ অধিকাৰৰ নামত সন্ত্ৰাসবাদক এতিয়াৰ পৰা কোনেও নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিব কোনো ব্যক্তিয়ে নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিব সন্ত্ৰাসবাদক ইয়াৰ উপৰিও আহিছে কেইবাটাও নতুন নিয়ম এইকেইটা নিয়ম এতিয়াৰ পৰা বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে 1 জুলাইৰ পৰা বলবৎ হ'ব এই নতুন আইন কেইখন গণধৰ্ষণৰ ঘটনাত যদি জড়িত হয় কোনোবা তেনেহলে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব এই আইনৰ জৰিয়তে ইফালে যৌন নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য এতিয়া ভিডিঅ' ৰেকৰ্ড কৰাটো বাধ্যতামূলক কাৰণ আদালতে এতিয়া বিচাৰিব ডিজিটেল এভিডেন্স সকলোবোৰ ডিজিটেল তথ্য এতিয়া আদালতত গ্ৰহণযোগ্য হ'বলৈ গৈ আছে যেটো পূৰ্বতে হোৱা নাছিল লগতে দেখত এই তিনিখন নতুন আইন অহাৰ লগে লগে কি হ'ব অপৰাধীৰ বাবে এটাইতকৈ বেয়া খবৰ যে অপৰাধী আগতে কি হৈছিল আইনী সুৰুঙাৰে হাৰি যাব পাৰিছিল কোনো অপৰাধীয়ে দীঘলীয়া যেতিয়া এটা কেছ চলি থাকে ইটোৰ পাছত সিটো তাৰিখ দি থকা যায় তেতিয়া কি হয় কোনোবা এটা সুযোগ লৈ আইনৰ সুৰুঙাৰে হাৰি যোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু এতিয়াৰ পৰা অপৰাধী হাৰিব নোৱাৰিব কোনো সুৰুঙাৰে বাচি যাব নোৱাৰিব কাৰণ এই তিনিখন আইনৰ জৰিয়তে সকলোবোৰ খৰটকীয়া হ'বলৈ গৈ আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় এই বিশেষ তিনিখন আইন আহিছে নতুন আইন অনুসৰি গণহত্যাত জড়িত সকলক ফাঁচি দিয়া হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে ৰাজদ্ৰোহৰ যেটো ধাৰা আছিল আগতে 124A এতিয়া সমাপ্ত হৈছে সমান্তৰালকৈ ৰাজদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াৰ পৰা বলবৎ হ'ব দেশদ্ৰোহ আইন আৰু দেশদ্ৰোহ আইন এতিয়া তৎকালীনভাৱে ব্যৱস্থা লোৱা আইন হৈ গৈছে নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব নোৱাৰিব কোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য দিব লাগিব কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তথ্য দিব লাগিব কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পৰিয়ালক সকলো তথ্য আৰক্ষীয়ে ডিটেইলছ দিব লাগিব সমান্তৰালকৈ কেৱল সেইখিনিয়ে নহয় কোনো এটা গোচৰত 90 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ল সকলোবোৰ তথ্য সুচাৰুৰূপে বিতংভাৱে আৰক্ষীয়ে দিবই লাগিব এই নতুন আইন তিনিখনৰ জৰিয়তে এতিয়া সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে ন্যায় পাবলৈ গৈ আছে 1 জুলাইৰ পৰা দেখত বলবৎ হ'ব এই তিনিখন আইন দেখত অন্ত পৰিল আইপিসি আৰু সিআৰপিসি ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা দ্বিতীয়খন ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন এই তিনিখন আইন আহিছে ভাৰতবৰ্ষত এই নতুন আইন অনুসৰি গণহত্যাত জড়িত সকলক ফাঁচি দিয়া হ'ব ৰাজদ্ৰোহৰ যেটো ধাৰা আছিল 124A এতিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু ৰাজদ্ৰোহৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতবৰ্ষত আহি গল দেশদ্ৰোহ আইন এতিয়াৰ পৰা দেশদ্ৰোহ আইন বলবৎ হ'ব ভাৰতবৰ্ষত নতুন আইন অনুসৰি আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ তথ্য নিজৰ খাকি পোছাকৰ বলিয়ান হ'ব নোৱাৰিব খাকি পোছাকৰ অপব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰিব আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে পৰিয়ালক তথ্য দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে কোনো এটা গোচৰত 90 দিনৰ ভিতৰত কি হ'ল সকলো তথ্য আৰক্ষীয়ে দিব লাগিব তাৰ তথ্য গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনক দিব লাগিব গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ব্যক্তিজনৰ পৰিয়ালকো দিব লাগিব আৰক্ষীয়ে লগতে কিশোৰীৰ সৈতে যদি ধৰ্ষণত জড়িত কোনো লোক আছে তেওঁক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড দিয়া হ'ব সন্ত্ৰাসবাদক লৈ দেখত আহি গল কঠোৰ আইন সন্ত্ৰাসবাদত যিসকল জড়িত তেওঁলোকতো সন্ত্ৰাসবাদীয়ে বা তেওঁলোকতো অপৰাধীয়ে কিন্তু সন্ত্ৰাসবাদক প্ৰশ্ৰয় দিয়া লোকসকলকো অপৰাধী ৰূপে গণ্য কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেইবাটাও নতুন নিয়ম আহি গৈছে আৰু 1 জুলাইৰ পৰা বলবৎ হ'বলৈ গৈ আছে এই তিনিখন নতুন আইন
हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। अब ये देश आजाद हो चुका है, लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है, तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे। जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता है। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही, सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी, इसको कंपलसरी कर दें। और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है। जो कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। तो मेरा रिलेटिव अगर कोई थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस में मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अज्ञात स्वरूप से किसी को अनऑथराइज कब्जा रखकर नहीं रह पाएंगे। पुलिस अधिकारी ने 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या तो डिजिटल माध्यम से देना होगा। ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रही। अब ये देश आजाद हो चुका है,
लोकतांत्रिक देश है। शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मैं फर्क समझाता रहा हूं, जो बड़े कटाक्षमय तरीके से ओवैसी साहब हंस रहे इसलिए, मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए, और जेल में जाना चाहिए। मानिए, ये हमारी सरकार का ट्रस्ट है। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। एक नया चैप्टर महिला और बच्चे के प्रति अपराध का हमने ऐड किया है। इस विधेयक में 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार से संबंधित प्रोविजन में हम बदलाव कर रहे हैं। मौजूदा बलात्कार का प्रोविजन रीनंबरिंग तो हुआ है, तथा नाबालिग महिलाओं के सामूहिक बलात्कार को पॉक्सो के साथ सुसंगत बना देता है, क्योंकि कुछ प्रोविजन ऐसे थे जो पॉक्सो में ज्यादा हार्ड थे। जिनको फेवर करनी थी वहां पुलिस स्टेशन में पॉक्सो अप्लाई नहीं किया जा सकता। अब पॉक्सो अप्लाई करे न करे, बलात्कार करने मात्र से पॉक्सो की सभी धाराएं ये न्याय संहिता के माध्यम से लागू हो जाएगी और उनको सजा। पुलिस द्वारा दंडित कार्यवाही, सीआरपीसी में कोई समय निर्धारित नहीं। आप एक कंप्लेन देते हो, इसका संज्ञान वो 10 साल के बाद भी ले सकते हैं। अब 3 दिनों के अंदर ही एफआईआर दर्ज करनी होगी अगर प्राथमिक जांच होगी। इसको कंपलसरी कर दे, और 3 से 7 साल की सजा के मामले में 14 दिनों के अंदर प्रारंभिक जांच, आरोप सही है या गलत है, इसका प्रारंभिक जांच देकर एफआईआर करनी पड़ेगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 14 दिन तक प्रारंभिक जांच कर सकते हो, और छोटी सजा है तो 3 दिन के अंदर ही एफआईआर रजिस्टर करनी पड़ेगी। सबसे पहली न्याय में समय की कटौती यहां होगी। 24 घंटे में तलाशी रिपोर्ट के बाद 24 घंटे में उसको न्यायालय के सामने रख दिया जाएगा, आप उस पर बैठ नहीं सकते हो। प्रत्येक जिले में और प्रत्येक थाने में एक पुलिस अधिकारी को हमने पदनामित किया है। जो कोई भी आएगा तो गिरफ्तारी में जो लोग हैं इसकी सूची उसको बतानी पड़ेगी। तो मेरा रिलेटिव अगर कोई थाने में गिरफ्तार है तो पुलिस ने मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अज्ञात स्वरूप से किसी को अनऑथराइज कब्जा रखकर नहीं रह पाएंगे। पुलिस अधिकारी ने 90 दिन के भीतर विक्टिम को जांच की प्रोग्रेस पत्र से या तो डिजिटल माध्यम से देना होगा। ये तीनों बिल कानून बनने के बाद आज से 100 साल तक, कम से कम 100 साल तक जितने भी टेक्नोलॉजी आएगी, ये टेक्नोलॉजी को इस कानून के तहत समाहित करने के कानूनी प्रावधान होंगे। मान्यवर